पुस्तक वितरण में संलग्न रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के समय श्री श्रीला दामोदर हरे राम 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 हरे हरे. With in Shishira Damodar party, he was with His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj and distributed many books, Srila Prabhupada's mercy, to many souls. And he is constantly traveling to Bombay since 1976 for book distribution and preaching. So in this way engaged since last 49 years. Prabhuji is also president of Nitai God Nataraj Temple in California and preaching there Krishna consciousness. Most importantly, he is very merciful to Iskcon Ujjain devotees, a very intimate relationship with His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj. He keeps coming in Srila Prabhupada Memorial Festival, global retreats and different other occasions. This particular festival, he has come just before beginning of the festival to guide us, bless us and inspire us with a wonderful association. So as you can see, the intimacy between Guru Maharaj and Udayananda who is the picture, Vyas Puja picture. So Guru Maharaj is embracing His Grace Udayananda Prabhu. So we are very grateful to His Grace Udayananda Prabhu for coming here and blessing us. Let us express our gratitude to him by loudly chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Grace Udayananda Prabhu ki, Srila Prabhupada ki, Anta Koti Gaur Bhakta Vrind ki. Hare Krishna. We found my size. He was trying to steal them. He offered me $100. I said, no way. I'm not going to contaminate you like that. Forget that. Hare Krishna. Where's Soumya Chaitanya? Soumya Chaitanya, paging Soumya. He's right here. Come here, Prabhu. Come here. Give me a whole bottle of water. I have to drink a little water. A whole bottle. Drink it. I have a little cup. I need a whole bottle. Is that the only way you can go? Okay. Sorry, we have a small emergency here. Hare Krishna. Bhakti Charu Swami Maharaj ki. Guru Maharaj ki. His loving divine grace, Bhakti Charu Swami Maharaj ki. Okay, that's the end of my lecture. No, just kidding. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Balaba Giripada Dari. Gopijana Balaba Giribada Dari.
Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivadadari Gopi Jana Balava Gopi Jana Balava Girivadadari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Bolo Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivadadari Gopi Jana Gopi Jana Balava Girivadadari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gaur Premanande Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paravachakacharya Astatara Satoshi Srimad His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paravachakacharya Astatara Satoshi Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paravachakacharya Astatara Sata His Divine Grace Bhakti Charu Swami Maharaja Ki Anantikoti Vaishnavrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavrinda Ki Shri Radha Krishna Gopi Gopinatha Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mathura Dham Ki
Shri Dwarka Dhama ki, Shri Mayapur Dhama ki, Shri Navadvip Dhama ki, Shri Jagannath Puri Dhama ki, Ganga Mai ki, Jamuna Mai ki, Tulsi Devi ki, Bhakta Devi ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, His Divine Grace Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the lotus feet of Shri Shri Guru and Garanga. Hari Hari Bol. I just wanted to say before I started class how happy I am to be here with all of you in this temple. In the whole of the world, in the whole of the universe, there is no temple that I love more than this temple. Where's that person who built this temple? I want to see him right now. Hare Krishna. But I do not have the eyes to see. You want to see God. Prabhupada said, you rascal, you want to see God, but you do not have the eyes to see God. So then you have to smear the ointment of bhakti on your eyes. And you will see God. And you'll see Guru Maharaj also with Srila Prabhupada. We have to smear their eyes with that ointment of love. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I have something very special in this package that I wanted to share with all of you since you took the courage to come here. Now, when you see what's in this package, it is very, very purifying. It will actually give you 100% full God realization and love of the Supreme Personality of Godhead. Srimad Bhagavatam! What else did you think it was? So I studied from this book, so I'm superstitious. I'm going to put this one here. Put this one here. Okay. How long, Maharaj? 5 minutes? Huh? 9 o'clock? Oh, Krishna, I better start talking fast. Hare Krishna. Okay, so, be given. Prabhuji, where's what verse was it? I lost my marker on my here. So what verse is it? Who knows? Someone showed me. It's chapter 11. No one knows? Oh, here it is. Okay, here it is. I got it. Text 30. Okay, Tato. You know what? This is a very long, there's a number of verses
If this is all right, Maharaj. I was just going to chant the Sanskrit to the verse, because there's 20 verses that don't have purports to it. And if it doesn't have a purport, Prabhupada said, we don't address it. Prabhupada didn't address it, we don't address it. So I'm going to read those verses, and then I'll get to the verse that we're going to do today. So I'm just going to read the first, because there's many. It's the story of Sita Ram. Has anyone ever heard of Sita Ram? Raise your hand. If anyone has heard of Sita Ram, raise your hand. Okay. There's a lot of people who haven't heard. Okay. Who has? Let me ask it in this way. Who has not heard of Sita and Rama? Okay, that's better. I was hoping we were communicating here. So, all right. So this is a beautiful, beautiful section. It's very merciful that Prabhupada gave me this verse. Tato darsha bhagavan ashokavani kashrame jamam swavirahav yadim simsapamulamashritam. So, translation. Thereafter, Lord Ramachandra found Sita Devi sitting in a small cottage. So, of course, if you've been coming to class, you'll know that Ramachandra fights with the rascal Ravana and cuts off his head or shoots the arrow in his heart, whatever, all the above. And now he's going to get Sita, who has been captured by the demon for 1 year. So now here's Sita and Ram meeting together. And then they go back to Ayodhya. Uh-oh. Is that my phone? Does someone have my telephone by chance? Huh? No? Oh, here it is. Okay. That's my ringtone. I said, someone's got my phone. Okay. So, thereafter, Lord Ramachandra found Sita Devi sitting in a small cottage beneath a tree named Shimshapa, in a forest of Ashoka trees. She was lean and thin, being aggrieved because of separation from him. Being aggrieved from separation of him. So we can also see through those eyes. We have been aggrieved in separation from our master also. Right? Seeing his wife in that condition, Lord Ramachandra was very compassionate. When Ramachandra came before her, she was exceedingly happy to see her beloved, and her lotus-like mouth showed her joy. After giving Vibhishan the power to rule the Rakshasa population of Lanka for the duration of 1 kalpa. Oh, okay. So, read from 30, and then you read to. Should I pause between Maharaj as they translate? Yeah. Okay. All right. No, you can read that, but when I give the class, so then should give some time to translate. Yes. Sorry. Sorry? No, but I've actually studied this first. Okay. Oh, you're saying we're going to run out of time. Well, there's only a few verses. Why don't we just read it, because it leads into what I wanted to say. Okay, just read Hindi.
हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 10वां अध्याय 30वें नंबर श्लोक से हम पढ़ रहे हैं। यस, जस्ट इन हिंदी। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने सीता देवी को अशोक वन में शेषपा नामक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठी पाया। वे राम के वियोग के कारण दुखी होने से अत्यंत दुबली पतली हो गई थीं। 31। अपनी पत्नी को उस दशा में देखकर भगवान रामचंद्र अत्यधिक दयाद्र हो उठे। जब वे पत्नी के समक्ष आए तो वे भी अपनी प्रियतम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं और उनके कमल सदृश मुख से आह्लाद झलकने लगा। 32वां श्लोक। भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार सौंपकर सीता देवी को पुष्पों से सुसज्जित विमान पुष्पक विमान में बैठाया और फिर वे स्वयं उसमें बैठ गए। भगवान अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान, सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण समेत अयोध्या लौट आए। 33वां। जब भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौटे तो मार्ग पर लोकपालों ने उनके स्वागतार्थ उनके शरीर पर सुंदर सुगंधित फूलों की वर्षा की और ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महापुरुषों ने परम प्रसन्न होकर भगवान के कार्यों का यशोगान किया। 34। अयोध्या पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने सुना कि उनकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत गोमूत्र में पकाए जौ खाता था, अपने शरीर पर वृक्षों की छाल से ओढ़ता था, सिर पर जटा बढ़ाए कुशों की चटाई पर सोता था। अत्यंत कृपालु भगवान ने इस पर अत्यधिक संताप व्यक्त किया। 35 से 38 श्लोक का अनुवाद। जब भरत को पता चला कि भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौट रहे हैं तो तुरंत ही वे भगवान की खड़ाऊ अपने सिर पर रखे और नंदीग्राम स्थित अपने खेमे से बाहर आ गए। भरत के साथ मंत्री, पुरोहित, अन्य भद्र नागरिक, मधुर गायन करते पेशेवर गवैये तथा वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। उनके पीछे जुलूस में रथ थे जिनमें सुंदर घोड़े जुते थे, जिनकी लगामें सुनहरी रस्सियों की थीं। ये रथ सुनहरी किनारी वाली पताकाओं तथा अन्य विविध आकार प्रकार की पताकाओं से सजाए गए थे। सैनिक सुनहरे कवचों से लैस थे, नौकर पान सुपारी लिए थे और साथ में अनेक विख्यात सुंदर गणिकाएं थीं। अनेक नौकर पैदल चल रहे थे और वे शाता, चामर, बहुमूल्य रत्न तथा उपयुक्त विविध राजसी सामान लिए हुए थे। इस तरह प्रेमानंद से आर्द्र हृदय एवं अश्रुओं से पूरित नेत्रों वाले भरत भगवान रामचंद्र के समीप पहुंचे और अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरण कमलों पर गिर गए। 39 एंड 40th वर्स। भगवान रामचंद्र के समक्ष खड़ाऊ को रखकर भरत जी आंखों में आंसू भरकर और दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान रामचंद्र भरत को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर देर तक गले से लगाए रहे और उन्होंने अपने आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के साथ रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों को नमस्कार किया। समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान को सादर प्रणाम किया। 41। अयोध्या के नागरिकों ने दीर्घ काल के बाद अपने राजा को लौटे देखकर उन्हें फूल की मालाएं अर्पित की, अपने उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे हिलाए और वे अति प्रसन्न होकर खूब नाचे। 42 एंड 43। हे राजन, भरत भगवान राम की खड़ाऊ लिए थे, सुग्रीव तथा विभीषण चंवर तथा सुंदर पंखा लिए थे, हनुमान सफेद शाता लिए हुए थे, शत्रुघ्न धनुष तथा 2 तरकस लिए थे तथा सीता देवी तीर्थ स्थानों के जल से भरा
कलश लिए थीं। अंगद तलवार लिए थे और ऋक्षराज जाम्बुआन सुनहरी डाल लिए थे। 44th, हे राजा परीक्षित, अपने पुष्पक विमान पर बैठे भगवान रामचंद्र स्त्रियों द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा बंदीजनों द्वारा गुणगान किए जाने पर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तारों तथा ग्रहों के बीच चंद्रमा हो। 45th and 46th, तत्पश्चात अपने भाई भरत द्वारा स्वागत किए जाकर भगवान रामचंद्र एक उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रवेश किए। जब वे महल में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने कैकेयी तथा महाराज दशरथ की अन्य पत्नी एवं अपनी माता कौशल्या, इन सभी माताओं को नमस्कार किया। उन्होंने अपने गुरुओं को यथा वशिष्ठ को भी प्रणाम किया। उनके हमउम्र मित्रों तथा उनसे कम आयु वाले मित्रों ने उनकी पूजा की तो उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी वैसा ही किया। इस प्रकार वे सभी महल में प्रविष्ट हुए। 47th, अपने पुत्रों को देखकर राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न की माताएं तुरंत उठ खड़ी हुईं, मानो अचेत शरीर में चेतना आ गई हो। माताओं ने अपने पुत्रों को अपनी गोद में भर लिया और उन्हें आंसुओं से नहलाकर अपने दीर्घकालीन विशोह के संताप से छुटकारा पा लिया। 48th, कुलगुरु वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र के सिर की जटाएं मुंडवा दी। तत्पश्चात कुल के वरिष्ठ जनों के सहयोग से उन्होंने चारों समुद्रों के जल तथा अन्य सामग्रियों के द्वारा भगवान रामचंद्र का अभिषेक उसी तरह संपन्न किया जिस तरह राजा इंद्र का हुआ था। 49th, भली भांति स्नान करके तथा अपना सिर घुटा करके भगवान रामचंद्र ने अपने आप को सुंदर परिधानों से सज्जित और माला तथा आभूषणों से अलंकृत किया। इस प्रकार वे अपने ही समान वस्त्र तथा आभूषण धारण किए अपने भाइयों तथा पत्नी के साथ अत्यंत तेजोमय लग रहे थे। 50th verse. Okay, so then should I speak like a few sentences and then you're going to translate? Or so that people, how do I? I can read because Yeah. then Okay, but I do want to read. I want to read the English because that's me. So 50. Being pleased by the full surrender and submission of Lord Bharat, Lord Ramachandra then accepted the throne of the state. He cared for the citizens exactly as a father, and the citizens, being fully engaged in their occupational duties of Varna and Ashram, accepted him as their father. अनुवाद 50वें श्लोक का। तब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तिपरक कार्यों में लगकर उन्हें पितृतुल्य स्वीकार किया। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki. जय। People are very fond of the pattern of Ram Raja. And even today, politicians sometimes form a party called Ram Raja. But unfortunately, they have no obedience to Lord Ram. So it is sometimes said that people want the kingdom of God without God. Such an aspiration, however, is never to be fulfilled. Good government can exist when the relationship between the citizens and the government is like that exemplified by Lord Ramachandra and his citizens. Lord Ramachandra ruled his kingdom exactly as a father takes care of his children and the citizens.
being obliged to good government of Lord Ramachandra, accepted the Lord as their father. Thus, the relationship between the citizens and the government should be exactly like that between father and son. When the sons in a family are well trained, they are obedient to the father and mother, and when the father is well qualified, he takes good care of the children. As indicated here by the words Swadharma Niratra Vanashram Gunan Vita, the people were good citizens because they accepted the institution of Varna and Ashram, which arranges society in the Varna division of Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, and the Ashram division of Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. This is actual human civilization. People must be trained according to the different Varnashram occupational duties. As confirmed in Bhagavad Gita, Chaturvarnyam Maya Shistam Guna Karma Vibhagasha. The four Varnas must be established according to varying qualities in work. The first principle for good government is that it must institute this Varnashram system. The purpose of Varnashram is to enable people to become God conscious. Varnashram Macharavata Purushena Para Pumam Vishnur Aradachete. The entire Varnashram scheme is intended to enable people to become Vaishnavas. Vishnu Asha Devata. When people worship Lord Vishnu as the Supreme Lord, they become Vaishnavas. Thus, people should be trained to become Vaishnavas through the system of Varna and Ashram, as they were during the reign of Lord Ramachandra, when everyone was fully trained to follow the Varnashram principles. Simply enforcing laws and ordinances cannot make the citizens obedient and lawful. That is impossible. Throughout the entire world, there are so many states, legislative assemblies, and parliaments, but still the citizens are rogues and thieves. Good citizens, therefore, cannot be enforced. Good citizenship, therefore, cannot be enforced. The citizens must be trained. As there are schools and colleges to train students to become chemical engineers, lawyers, or specialists, and many other departments of knowledge, there must be schools and colleges to train students to become Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, Brahmacharis, Grihastas. There must be a school for Grihastas. That's a good one. Definitely need that. Vanaprastas and Sannyasis. Hare Krishna. This will provide the preliminary condition for good citizenship. Vanashram Gunanvita. Generally speaking, if the king or president is a Rajarshi, the relationship between the citizens and the chief executive will be clear, and there will be no possibility of disruption in the state, because the number of thieves and rogues will decrease. In Kali Yuga, however, because the Varnashram system is neglected, people are generally thieves and rogues. In the system of democracy, so-called democracy, such thieves and rogues naturally collect money from other thieves and rogues, and thus there is chaos in every government, and no one is happy. But here, the example of good government is to be found in the reign of Lord Ramachandra.
If people follow this example, there will be good government all over the world. हरे कृष्णा। तात्पर्य 50वें श्लोक का, लोगों को राम राज्य जैसी व्यवस्था प्रिय है और आज भी राजनीतिक लोग कभी कभी राम राज्य नामक दल बना लेते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें भगवान राम में कोई श्रद्धा नहीं होती है। कभी कभी कहा जाता है कि लोग ईश विहीन ईश राज्य चाहते हैं, किंतु ऐसी महत्वाकांक्षा कभी पूरी होने वाली नहीं है। अच्छी सरकार तभी विद्यमान रह सकती है जब नागरिकों तथा सरकार के मध्य वैसा ही संबंध हो जैसा कि रामचंद्र तथा उनके नागरिकों ने प्रस्तुत किया। भगवान रामचंद्र ने अपने साम्राज्य पर वैसे ही शासन किया जिस तरह पिता अपनी संतान का पालन करता है, और नागरिकों ने भी रामचंद्र जी की अच्छी सरकार से कृतज्ञ होकर उन्हें पितृतुल्य मान लिया। नागरिकों तथा सरकार के मध्य पिता पुत्र का सा संबंध होना चाहिए। जब परिवार में पुत्र अच्छा प्रशिक्षण पाते हैं तो वे माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, और जब पिता योग्य होता है तो वह संतानों की अच्छी देखभाल करता है। जैसा कि स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता शब्दों से सूचित होता है कि लोग अच्छे नागरिक थे क्योंकि उन्होंने वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था स्वीकार की थी, जिसके अनुसार समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नाम के 4 वर्ण तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम होते हैं। यह वास्तविक मानव सभ्यता है। लोगों को विभिन्न वर्णाश्रम धर्मों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की स्थापना विभिन्न गुणों एवं कर्म के अनुसार की जानी चाहिए। अच्छी सरकार का पहला सिद्धांत यह होना चाहिए कि वह इस वर्णाश्रम प्रणाली को लागू करे। वर्णाश्रम का उद्देश्य लोगों को ईश भावना भावित होने के लिए प्रेरित करना है। वर्णाश्रम 4 वता पुरुषेण परपुमान विष्णुराराध्यते। समूची वर्णाश्रम प्रणाली लोगों को वैष्णव बनाने में समर्थ होने के लिए है। विष्णुरस्य देवता। जब लोग विष्णु को भगवान मानकर पूजते हैं तो वे वैष्णव बनते हैं। अतएव लोगों को उसी तरह से वर्णाश्रम प्रणाली के माध्यम से वैष्णव बनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, जिस तरह रामचंद्र जी के राज्यकाल में प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने के लिए शिक्षित किया जाता था। लास्ट पैराग्राफ। मात्र कानूनों और अध्यादेशों के बल पर नागरिकों को आज्ञाकारी और कानून पालक नहीं बनाया जा सकता। यह असंभव है। विश्व भर में न जाने कितने राज्य, विधानसभाएं तथा संसदें हैं, फिर भी लोग चोर तथा उछक्के हैं। अतएव अच्छी नागरिकता लादी नहीं जा सकती, अपितु नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जिस तरह केमिकल इंजीनियर, वकील या अन्य ज्ञान के विभागों में विशेषज्ञ बनने के लिए छात्रों के प्रशिक्षणार्थ स्कूल तथा कॉलेज होते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनने की शिक्षा देने के लिए स्कूल तथा कॉलेज होने चाहिए। इससे अच्छी नागरिकता की प्रारंभिक शर्त पूरी होगी। वर्णाश्रम गुणान्विता। सामान्य रूप से यदि राजा या राष्ट्रपति राजऋषि होता है तो प्रजा तथा मुख्य कार्यकारी के मध्य का संबंध स्पष्ट हो जाएगा और राज्य में किसी गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि चोर उच्चकों की संख्या घट जाएगी। किंतु कलयुग में वर्णाश्रम प्रणाली की उपेक्षा के कारण लोग सामान्यतया चोर और उच्चके हो गए हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में ऐसे चोर तथा उच्चके
अन्य चोर उचक्कों से पैसा इकट्ठा करते हैं, जिससे हर सरकार में अव्यवस्था रहती है और कोई भी सुखी नहीं रहता। किंतु भगवान रामचंद्र के राज्य में अच्छी सरकार का उदाहरण मिलता है। यदि लोग इस उदाहरण का अनुसरण करें तो सारे विश्व में अच्छी सरकार बन जाएगी। Thus end the purport. So, I know that was a long purport, but so are you going to translate as I go along? Yeah. Okay. What's that? Those sentences you speak like yesterday. So, but that purport was very, 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 very important purport for our society and for the whole world. तो मैं जानता हूँ ये तात्पर्य कुछ लंबा है, लेकिन ये जो तात्पर्य है ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है हमारे संस्था के लिए और पूरे विश्व के लिए भी। Ram Raj. So, and people clamor for Ram Raj, right? They want the kingdom of God, Ram, but they don't want to worship Ram. तो राम राज्य, लोग जो हैं राम राज्य के लिए बहुत लालसा करते हैं कि राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, लेकिन वे लोग भगवान राम की पूजा नहीं करते हैं। Besides that, Ram had all transcendental qualities. Ram had all qualities of compassion, intelligence. He was able to defend the innocent, and he was able to chastise the rascals. इसके अतिरिक्त भगवान रामचंद्र में अनेक दिव्य गुण थे। उनके अंदर ज्ञान था, उनके अंदर करुणा थी, और वे जो मासूम हैं उनकी रक्षा करते थे और बदमाशों को दंड भी देना जानते थे। Then one has to define who is a rascal. तो अब हमने ऐसा कहा तो हमें फिर ये परिभाषा देनी पड़ेगी कि बदमाश का अर्थ क्या है। Krishna says, "Avajananti mamudha manushim tanumashita." कृष्ण कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। Fools, rascals deride me when I appear in this form. They do not know my transcendental nature, my supreme dominion over all that be. मूर्ख और नराधम व्यक्ति जो हैं, जब मैं भोजन प्रकट होता हूँ तो वे मेरा उपहास करते हैं। वे मेरे दिव्य स्वभाव, मेरी प्रकृति को नहीं जानते हैं। So Krishna, of course, being the Supreme Personality of Godhead, also assumed the role of a king in Dwarka. तो कृष्ण निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने द्वारका में भी राजा की भूमिका निभाई। And he made sure there were no slaughterhouses, there was no gambling, intoxication, illicit sex, nowhere in the kingdom. और उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि पूरे राज्य में कहीं भी अवैध यौनाचार, जुआ, नशा, मांस, ये सब का आयोजन न हो। So Lord Ramachandra also ruled in the same way that Dwarkanath ruled in Dwarka. तो भगवान रामचंद्र ने भी अपना शासन उसी तरह किया जिस तरह द्वारकानाथ कृष्ण ने द्वारका में किया। So the wider world, we see no one follows any principles, no one takes, because Krishna and Lord Ramachandra also took advice from the Brahmins. तो हम बाह्य जगत में हम देखते हैं कि साधारणतः कोई भी इन सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। And the Brahmins would only speak from Guru Shastra Sadhu. क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र ने भी ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में राज्य चलाया था, और ब्राह्मण जो हैं गुरु साधु शास्त्र के आधार पर ही बात करते हैं। And then one lives like a life of complete happiness in this world, and then in the next you attain Goloka Vrindavan. और जब उन सिद्धांतों के आधार पर जीवन चलाया जाता है तो इस जीवन में व्यक्ति बहुत अच्छे से रहता है और अंत में गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है।
But now the rascals, they rule the world, except Prime Minister Modi, he's a good guy. But everyone else is a rascal. तो वर्तमान में जो कई नेता हैं वो शासन करते हैं वो उचित नहीं है. And because Modi actually, did you receive this letter from Prime Minister Modi about Janmashtami? Did everyone get that letter? Okay. What other prime minister or president of a country went and glorified Srila Prabhupada and Janmashtami and said yat yat acharati sistas tat tat eva tarojana? तो प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष रूप से इस्कॉन के काफ़ी अनुकूल भाव रखते हैं. जन्माष्टमी पे आप लोगों ने उनका पत्र जो उन्होंने दिया था वो आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें वे श्रील प्रभुपाद की भी महिमा गान करते हैं और बताते हैं कि यद्यद आचरति श्रेष्ठस तत्तते वेतरो जना. Which means whatever actions are performed by great men, common men will follow in their footsteps. इसका मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुगमन करते हैं. So our movement is also like a kingdom. तो हमारा आंदोलन भी एक राज्य की तरह है, किंगडम. This is the kingdom of Bhakti Prem Swami. ये भक्ति प्रेम स्वामी का राज्य है. He has been blessed by his Guru Maharaj to take responsibility over this kingdom. उन्हें अपने गुरु महाराज के द्वारा ये आशीर्वाद मिला है कि वे इस राज्य की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं. So in the material world, taking over a government means that person gets really rich and all his subjects become very poor. तो भौतिक जगत में जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो इसका अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है और उसके अधीन जितने भी हैं वो सब बहुत गरीब हो जाते हैं. प्रजा मतलब गरीब हो जाती है. In America right now, it's a joke. The American government is a joke. अमेरिका में वर्तमान में ये एक मजाक है कि अमेरिकी सरकार एक मजाक की तरह है. They put this jester, this joker, Joe Biden, in that position, and it's like Cully. Cully wore a crown. He was wearing a crown, and he was beating on the bull, breaking the legs of the bull, acting like he was a king. When the real king, Maharaj Parikshit, came upon him and chastised him severely. तो हम इस प्रकार देखते हैं कि कलयुग में जैसे शास्त्र वर्णन भागवत में कि कली जो है किस तरह अपना राज्य फैलाया हुआ था, तो उस समय परीक्षित जो बैल के रूप में जो कली जो है उन प्रहार कर रहा था, तब परीक्षित महाराज आते हैं और कली को दंड प्रदान करते हैं. So right now, just briefly, in America, everyone, like Joe Biden was supposedly voted by the masses because the Democratic Party was supposed to be like common people, right? And supposedly, of course, there's so much cheating in the vote counting. Millions and millions of votes were cheated on. Like a third world country. We used to laugh in other countries how there was so much cheating in the voting system. And then it had been so big in America. So they put him in power. And like you would think, okay, now let me take care of the common people, the middle class. But instead, the middle class has become so poor. Everything is so expensive that people are losing their homes. They have to decide whether to keep the lights on or put food on the table. It's a very bad situation. तो अमेरिका में जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं या जो शासक हैं वहाँ पे वे किसी तरह चुनाव में जीते, लेकिन उनका जो पालन करना चाहिए मध्यम वर्गीय लोगों का वो उस तरह पालन नहीं हुआ, जिसके कारण वहाँ पे अभी काफ़ी गरीबी का माहौल व्याप्त हो रहा है. So as the people become poor, these leaders
enrich themselves, they become very, very rich. तो जैसे प्रजा गरीब होती चली जाती है तो जो जो राजा हैं या जो शासन कर रहे हैं वे अपनी संपत्ति को और बढ़ाते चले जाते हैं. So this is not Ram Raja. ये राम राज्य नहीं है. Because in Ram Raj, first of all, the principle is the leader, the king, is the king, and he is actually the father of the nation. क्योंकि राम राज्य की पहली शर्त है कि जो नेता है या जो राजा है वो उस राष्ट्र के पिता की तरह है. In a good family, the father is loving his dependents, his wife and children, and working very hard for them. एक अच्छे परिवार में पिता जो है अपनी पत्नी या बच्चों के देखभाल के लिए बहुत प्रयास करता है और उनका लालन पालन करता है. What kind of father would enrich himself and then make his children poverty stricken? जो व्यक्ति खुद को तो अमीर बनाता जाए और अपने बच्चों को एकदम भुखमरी की हालत में ले जाए तो क्या वो सही पिता है? So this democracy is a nonsense system, because if you have enough money, you will get someone, they'll place someone in a position that serves the interest of a very few people. तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि यदि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा है, तो आप ऐसे व्यक्ति को बिठा सकते हैं जो कि बहुत ही कम लोगों के हित के बारे में चिंतन करेगा. So in Ram Raj, everyone is prospering because they are the children of the king. लेकिन राम राज्य में हर व्यक्ति समृद्धिशाली था क्योंकि वे राजा की संतानों की तरह जीवन जी रहे थे. So in our kingdom here, actually Radha Madan Mohan are actually the king and queen. But the main servant is Bhakti Prem Swami here. So he has been authorized to oversee Radha Madan Mohan's kingdom. तो हमारे इस राज्य की बात करें तो यहाँ पे वास्तव में श्री श्री राधा मदन मोहन हैं राजा और रानी, लेकिन मुख्य सेवक हैं भक्ति प्रेम स्वामी महाराज. उनको प्रमाणित किया गया है कि वे इनकी सेवाओं का ध्यान रखें. And so as he is the father of this community, because he is the ruling personality that Krishna has empowered to oversee the activities of Radha Madan Mohan Mandir. तो चूंकि वे इस जो समुदाय है उसके पिता हैं, कृष्ण ने उनको ये शक्ति प्रदान की है कि इस राधा मदन मोहन मंदिर के सारे कार्यों का वो देखभाल करें. But it's not that Maharaj himself is the only one who embraces Ram Raj. लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल महाराज ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि राम राज्य को अपना रहे हैं. Every one of us have to embrace Ram Raj. हम सभी को, हर एक को यहाँ जो है उपस्थित, उन्हें राम राज्य को अपनाना है. Because unless you're just a new person walking into the temple, generally you have some responsibility for other devotees, right? तो कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कोई नया व्यक्ति जो है मंदिर में अचानक प्रवेश करता है. साधारणतः तो हम सभी भक्तों को अलग अलग जिम्मेदारियां प्रदान करके रखते हैं. Sorry. So you have to see anyone who is in a subordinate position to you, you have to see them as your children. तो साधारणतः हम ही देखते हैं यदि कोई हमारे अधीन है, हमारे अधीन सेवा कर रहा है, तो हमें उन्हें संतानों के रूप में देखना चाहिए. And we don't believe in child abuse. और हम जो है इस तरह से चाइल्ड अब्यूज में विश्वास नहीं करते हैं. So we have to be very conscientious that we're dealing with Krishna's devotees. तो हमें बहुत ही सचेत रहना चाहिए कि हम कृष्ण के भक्तों के साथ
आदान प्रदान कर रहे हैं। Whether you are the sannyasi, GBC, temple president, or a person just walking into the temple for the first time, we have to see that these are all Krishna's parts and parcels. चाहे वो सन्यासी हो, जीबीसी हो, मंदिर अध्यक्ष हो या कोई नया व्यक्ति जो मंदिर में प्रवेश ही कर रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि वे सभी कृष्ण के अंश हैं। So Krishna consciousness, Srila Prabhupada said, is a microcosm of what we can then extend to the whole world. It's a microcosm. It's a small. It's like a little example. You know, how we call microcosm that we have to expand to the whole world. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण भावना तभी छोटे रूप में है, लेकिन हमें इसको पूरी दुनिया में विस्तारित करना है। We saw such a perfect example of Raj in the personality of his Divine Grace Bhakti True Swami. तो श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज के व्यक्तित्व में हमने राम राज्य का एक अद्भुत उदाहरण देखा। He was so merciful to everyone. वे सभी के प्रति कितने अधिक कृपालु थे। So there's a statement in the Christian scriptures that you should do unto others as you would have them do unto you. तो क्रिश्चियन साहित्य में एक वाक्य है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही आचरण कीजिए जैसा आप अपेक्षा करते हैं कि वे आपके साथ करें। And Guru Maharaj was the perfect example of that. और गुरु महाराज इसके सबसे श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक थे। He always treated people in such a refined, considerate, and compassionate way. उन्होंने सभी व्यक्तियों के साथ बहुत ही करुणामय तरीके से और विचारशील तरीके से सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया। That's why we call him Bhakti Charu Maharaj, because he was a great king. इसलिए हम उन्हें कहते हैं भक्ति चारू महाराज, क्योंकि वो एक महान राजा हैं। So he is following the Acharya. Srila Prabhupada was the greatest king. तो वे जो हैं एक महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जो कि सबसे महानतम राजा हैं, उनका अनुसरण कर रहे थे। So he taught, Acharya means you teach by your example. तो उन्होंने हमें सिखाया कि आचार्य का मतलब है जो अपने आचरण से सिखाते हैं। So Guru Maharaj was he perfected his Krishna consciousness by the mercy of Srila Prabhupada and did unto others, treated others like he would want them to treat himself. तो शील प्रभुपाद गुरु महाराज से शील प्रभुपाद कृपा से गुरु महाराज ने कृष्ण भावनामृत में सिद्धि हासिल की और साथ ही सभी के साथ वैसा आचरण किया जिस तरह वे चाहते थे कि लोग उनके साथ करें। So I know we're on a time constraint here, so I'm going to wrap it up. Although I have a lot to say, but this festival, which is the memory, it's a memorial festival of Srila Prabhupada, has now become the memorial festival of Srila Prabhupada and Srila Bhakti True Swami Maharaj. तो कहने को तो मेरे पास बहुत है, लेकिन समय की एक सीमा है। तो ये जो उत्सव है, ये स्मरण उत्सव, ये अभी श्रील प्रभुपाद और श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज का स्मरण उत्सव है, दोनों का। And there is no way you can love Guru Maharaj or Srila Prabhupada more than becoming like Guru Maharaj and Srila Prabhupada. तो इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है
श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज के प्रति प्रेम को व्यक्त करने का कि हम उनकी तरह बनने का प्रयास करें। So, Guru Maharaj was one person and he has expanded into 7,000. तो गुरु महाराज एक व्यक्तित्व थे और उन्होंने अपना 7,000 शिष्यों के रूप में अपना विस्तार किया। He reasons ill who say that Vaishnavas die when thou art living still and sound. Vaishnavas die to live, and living spread the holy name around. वे असत्य कहते हैं कि जो कहते हैं कि वैष्णव मर जाते हैं क्योंकि वे अपनी वाणी के माध्यम से हमेशा जीवित रहते हैं। वैष्णव मरते हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए और मरने के बाद भी हरिनाम के माध्यम से वो जो है जीवित रहते हैं उनकी वाणी के माध्यम से। Okay, and I want to finish with a little thing that Prabhupada wrote in the Srimad Bhagavatam purport in the 6th canto, chapter 10, verse 6. So we'll do line for line. Okay, श्रील प्रभुपाद जी ने 6th canto 10th chapter 5वें 6ठे श्लोक में जो कहा उसके साथ हम अपनी इस कक्षा को समाप्त करेंगे। Everything within this material world will be destroyed. इस संसार में जो कुछ भी है वो नष्ट हो जाएगा। And therefore one should use everything for good purposes. और इसलिए हमें हर वस्तु का उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए करना चाहिए। If one is advanced in knowledge, he must be prepared to sacrifice anything. यदि कोई ज्ञान में वास्तव में उन्नत है तो उसे हर वस्तु को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए for a better cause. एक अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। Okay, listen to this next sentence. It's very important. अगले वाक्य को सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। At the present moment, the entire world, and this was written 1974, right? So this is almost 50 years ago. Where Prabhupada says, at the present moment, and we can look at the present moment what we're facing. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वर्तमान समय में पूरा जगत, ये वर्तमान समय मतलब 1974 में ये लिखा गया है और आज 50 साल हो गए, लेकिन आज वर्तमान समय आज का भी देखेंगे तो ये उतना ही प्रासंगिक है। At the present moment, the entire world is in a dangerous position. वर्तमान समय में पूरा संसार एक खतरनाक भयावह स्थिति में है। Under the spell of a godless civilization. क्योंकि वो एक ईश्वरहीन सभ्यता के साये में जी रहा है। The Krishna consciousness movement needs many exalted, learned persons. कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बहुत विद्वान व्यक्तियों की आवश्यकता है who will sacrifice their lives. वे लोग अपने जीवन का उत्सर्ग करेंगे। He sacrificed his life. जिस तरह श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन का उत्सर्ग किया, Guru Maharaj sacrificed his life. गुरु महाराज ने अपने जीवन का उत्सर्ग किया है। They didn't just talk it. They didn't just talk. They walked it. उन्होंने केवल ऐसा नहीं सिर्फ बोला बल्कि वो उस तरह आचरण भी किया। They need to sacrifice their lives to revive Krishna consciousness throughout the world. ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन का उत्सर्ग करने की आवश्यकता है ताकि कृष्ण भावनामृत का पूरे संसार में पुनर्जागरण हो सके। We therefore invite all men and women, इसलिए हम सारे स्त्री पुरुषों को आमंत्रित करते हैं, advanced in knowledge, वे जो ज्ञान में उन्नत हैं उनको आमंत्रित करते हैं to join the Krishna consciousness movement कि वे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हों and sacrifice their lives और अपने जीवन को समर्पित करें
for the great cause of reviving the God consciousness of human. ताकि इस मनुष्य सभ्यता मनुष्य जाति में कृष्ण भावनामृत को पुनर्जागृत करने में मदद कर पाएं throughout human society. पूरे मानव समाज में. That's Ramraj, and Ramraj has to live today here with us first. Then we can infiltrate nations, and it is happening. We're having one of the largest countries in the world, second largest population country in the world. The Prime Minister is spreading the glories of Srila Prabhupada. That is a significant accomplishment. We're expanding. हम तो अपना विस्तार कर रहे हैं और ये जगत जो है लेकिन नरक की ओर बढ़ रहा है. But Srila Prabhupada said one time, it will go down in history that this Krishna consciousness movement will save the world in its darkest hour. लेकिन श्रील प्रभुपाद ने एक समय कहा था कि इतिहास में लिखा जाएगा कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार के सबसे खतरनाक समय में पूरे संसार को बचाएगा. It will happen. It's just a question of whether you get credit for it. ये तो होना ही है. प्रश्न बस यही है कि क्या आप लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं. So never give up your Krishna consciousness. तो कभी भी कृष्ण भावनामृत को छोड़ के न जाइए. Don't quit. कभी भी इसे त्यागिए मत. Quitters never win and winners never quit. जो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं और जीतने वाले कभी मैदान छोड़ के भागते नहीं हैं. And we are a movement of winners. और हमारा जो आंदोलन है वो विजेताओं का आंदोलन है. Srila Prabhupada ki जय. Bhakti Charu Swami Maharaja ki जय. Srimad Bhagavatam ki जय. Ramraj ki जय. Gaur Premanande. Is there any questions? Do we have time for maybe, or is it getting late? Any questions? If someone has one question, I'll answer it if they have. Huh? That means you agree. You agree? You don't agree? इसका आप सभी सहमत हैं जो प्रभु जी ने कहा हरिबो. What did you say? They're saying हरिबो. So you all agree? Okay. Prabhupada says if you have no questions means you agree. Okay. Srila Prabhupada ki jai. I think there is someone who is showing Kavi Chandra Maharaj is going to show up at 9:30. Is that it? He's coming. Oh, it's 10:30. Oh, okay. Okay, it says 9:30 here on mine. Because he told that he will take notice there, he will go to one house. Acha. And then come. Okay, so 10:30. All right. Well, I could have gone a little long. Okay, that's all right. Hare Krishna. Take So we are very grateful to His Grace Udayananda Prabhu. हम बहुत बहुत आभारी हैं His Grace Udayananda Prabhu के और अपना आभार व्यक्त करते हैं. एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. His Grace Udayananda Prabhu की श्रील प्रभुपाद की. साथ ही एक बहुत विशेष सूचना है सभी के लिए. हमारे इस्कॉन के विश्व जो लीडर हैं हमारे मंदिर के जीबीसी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की स्वास्थ्य में समस्या होने के कारण आज विश्व के विख्यात डॉक्टर अशोक सेठ जी के द्वारा 11:30 बजे उनकी एंजियोप्लास्टी की जाएगी. हृदय का ऑपरेशन किया जाएगा. तो हम सभी भक्तों से
ये निवेदन करते हैं कि भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करें कि ये जो एंजियोप्लास्टी है ये सफलतापूर्वक हो और महाराज पूरी तरह सुरक्षित रहें और उनका संग हमें लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। यही प्रार्थना करते हुए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Holiness Gopal